ओके, एंड ये मेरा वर्किंग एरिया। सो ऑर्थोग्राफिक पर्सपेक्टिव जो भी आप बोल सकते हो उसको। यहाँ पे मेरे पास कुछ सेगमेंट्स हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओहो यहाँ पे गया मैं, और पेंट डिफॉर्मेशन। सो सेलेक्ट प्रेसाइज, जस्ट मेक सम बिग, सेव करते रहे फाइल को, another make something like big, okay, perfect. So not this type, just -24 and down, इधर से डाउन 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 डाउन। ओके, यहाँ चेक करते रहिए आप कि जैसे मैं इसको डाउन कर रहा हूँ ना, कितना मुझे डाउन होना चाहिए ये। ओके, इसको बाद में कर लेंगे, यहाँ पे वैसे कर सकते हो अभी भी। सो यहाँ से मैंने इसको कर दिया एंड ओके। सो कुछ इस तरह से मैंने इसको, ओके, perfect, everything is going perfect. Okay, something here, not this time. Okay, not here. Okay, so we use some relaxing tool because of I just don't want any wrong area and different type of like. Okay, okay, done. So just make it something up right there. Okay, that's great. So ये अपना सेट हो चुका है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और एंड सेलेक्ट टारगेट, हाइड कर देते हैं। ओके, मैंने यहाँ जो बॉक्स था वो हाइड कर दिया। कुछ इस तरह से मैंने इसको सेट किया। हम थोड़ा सा और पीछे भी ले जा सकते हैं, सॉरी। सो परफेक्ट है, यहाँ से ये चीज़ बन गई अपनी। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेव किया एंड वीरे सन, ओके। So VRAY from here, just click and something up, go with this type of, कितना मुझे सन यहाँ पे हाइट पे चाहिए। So this is okay and just go and save render. Once I have this render, really this is yeah, this one is okay. So सेलेक्ट एंड हम चलते हैं एक बार ब्रिज में, और कुछ मेरे को फ्लोर चाहिए था, मीन्स ओके, दिस इज़ वेरी गुड फॉर आवर प्रोजेक्ट। Also this one also, I'll use this one, yeah. So select and apply already, you can see. Just go and use some UVW map, and there is, I told you, just this value is perfect for this one, because यहाँ पे जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ये वाली, ये सब बहुत छोटी छोटी हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होगी।
अभी जैसे हम इसको एक बार वापस से रेंडर करते हैं तो अपना रिज़ल्ट कुछ ये आ रहा है। अब ये तो हो गया परफेक्ट। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ना, जैसे देखो ये क्या ऑर्नोल्ड क्या आ रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से वीरे कन्वर्ट सी कन्वर्ट डायरेक्टली, just convert and render again. Now this one, so we don't have any renders, textures are here, so just go bitmap converter, yes, convert. Okay, you can see the result is blowing here, and convert again, perfect. I can just go and render. Nope, because there is some problem with the texture, so just go select. Okay, this is the delete. The texture is this one is not this one. Is that no? Is that no? And is that no? There is no texture here. Just some bitmaps are here. Okay, so we don't want any textures like this, so just go and diffuse. Okay, done. Okay, so select, open group, select, I think this is right texture. No, I think this one. Yep, this one is perfect texture. Okay, so I'll post like that. That's very nice. Just select and boom, here's another texture, so just I'll just pick. Okay, so just make a new mega. Okay, and pick like that. Just go and change material type of VRAY. That's great. So just go and diffuse. Don't need anything, just go and don't need this one, just bump map. Okay, perfect, done. Show result. This is okay. Are you okay? Assign, what the if it's not doing work, just go and select something like that and apply. What the hell with these are showing this material, not showing. Okay, just हम रेंडर में चेक कर लेंगे इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे आए एक बार के लिए, यहाँ पे सेलेक्ट किया, रेंडर किया, इसको सॉल्यूशन किया, इन दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मेगा में गए और मेगा के अंदर जाके इनको क्या किया हमने, पिक किया, यहाँ से पिक मटेरियल। ओके, ये मटेरियल आ गया, इसको डिलीट कर दो पूरा, यहाँ से मैं सारा डिलीट कर दूंगा, जब सिर्फ एक सोर्स मैपिंग रखूँगा। यहाँ पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया, सेट किया, देन सेलेक्ट एंड अप्लाई। ओके, छोड़ दूँ, जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद वापस से इसको सेलेक्ट किया एंड ग्रुप। Okay, so this is now render. Okay, done. So everything is perfect. अभी क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट कैमरा और मैं इंटरेक्टिव रेंडरिंग चालू करता हूँ कुछ टाइम के लिए। ओके, एंड समथिंग बिग, just go and make it 100, not 1000, just 100। ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं बताऊँगा, जस्ट अभी मैं कर रहा हूँ ऑटोमेटिक वर्टिकल टिल्ट।
यहाँ पे रेजोल्यूशन ओवरराइड मतलब आप जैसे यहाँ पे अभी रेजोल्यूशन क्या चल रहा है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और आप उसको ऑटोमेटिकली जैसे उसके हिसाब से बना भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने न्यूट्रल कर दिया, एक्सपोजर इज परफेक्ट एंड एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट, जस्ट 35 एंड परफेक्ट। नाउ दिस इज स्टॉप द रेंडर एंड select this one, this will add unhide all, just delete it. Okay, so what we do now, यहाँ पे हम आए और 3D models, vegetation, trees, so I select